बड़ौदा जिले के शिनौर में चर्चित हनी ट्रैप मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। अदालत के आदेश के बाद पुलिस ने आरोपी की संपत्ति को सील कर दिया है। जांच के सामने आया है कि आरोपी ने कथित तौर पर अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर चल रहे और चल और अचल संपत्तियां खरीदी। शिनौर पुलिस थाने में दर्ज मामले में शिकायतकर्ता हरीश भाई पटेल से आरोपियों पर अलग अलग समय और स्थानों पर करीब 75,75,550 रुपए की उगाही करने का आरोप। मामले की गंभीरता को देखते हुए बड़ौदा ग्रामीण पुलिस ने विशेष जांच टीम का गठन किया। पुलिस ने ह्यूमन इंटेलिजेंस और तकनीकी साक्ष्यों की मदद से जांच को आगे बढ़ाया और आरोपियों को गिरफ्तार किया। जांच के दौरान आरोपी की संपत्तियों की जानकारी सामने आई, जिसके बाद पुलिस ने शिनौर अदालत में संपत्ति जब्त करने के लिए आवेदन किया। सुनवाई के दौरान आरोपी को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया, लेकिन वह ये साबित नहीं कर सका कि संपत्ति वैध आय से खरीदी गई। इसके बाद अदालत ने भरूच जिले के पालेज गांव की साले 2 सोसाइटी में स्थित संपत्ति नंबर 5811 वाले मकान को जब्त करने का आदेश जारी किया। इस मकान की अनुमानित कीमत करीब 12,70,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार अदालत की प्रक्रिया पूरी होने के बाद नियमों के तहत संपत्ति जब्त की कार्रवाई की गई। फिलहाल पुलिस मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच आगे बढ़ने पर इस मामले में और भी अहम खुलासे हो सकते हैं। ગઈ 6 ફરવરી 2026 ના રોજ વડોદરા જિલ્લાના શિનોર પોલીસ સ્ટેશનની અંદર એક ચીટિંગ અને હની ટ્રેપનું કેસ રજીસ્ટર થયો હતો। એ કેસના અનુસંધાનમાં એ કેસના ફરિયાદી હસમુખ ઉર્ફે હરેશ રણછોડભાઈ પટેલ દ્વારા સાથે 75 લાખથી વધારેની ચીટિંગ અને હની ટ્રેપની ફરિયાદ શિનોર પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલી હતી। આ કેસની ઇન્વેસ્ટિગેશન દરમિયાન પોલીસ દ્વારા મલ્ટિપલ લોકોની અરેસ્ટ કરવામાં આવી હતી। મલ્ટિપલ કેશ અને ગોલ્ડનું સીઝર કરવામાં આવ્યું હતું, જેની અંદર 14 લાખથી વધારે સોનાના જેવરાત પણ પોલીસ દ્વારા સીઝ કરવામાં આવ્યા હતા। આ ક્રાઇમના મળેલ નાણાકીય પૈસાથી આરોપી દ્વારા ભરૂચ જિલ્લાના પાલેજ ની ખાતે એક ફ્લેટ ખરીદવામાં આવ્યું હતું। તે ફ્લેટને વડોદરા પોલીસ દ્વારા BNSS ની 107 કલમ અનુસંધાનમાં જપ્તી કરવાનો હુકમ મેળવવામાં આવ્યો છે। BNSS ની 107 કલમ મુજબની આ પ્રથમ કાર્યવાહી વડોદરા જિલ્લાની અંદર છે અને આ કલમ અનુસંધાનમાં પોલીસ કોઈ પણ ગેરકાયદેસર ક્રાઇમથી વસાવેલી પ્રોપર્ટીને જપ્ત કરવાનો અધિકાર રાખે છે અને એને ધ્યાનમાં લઈને આ પ્રથમ કાર્યવાહી વડોદરા જિલ્લાની અંદર કરવામાં આવી છે।